Very good morning to all of you. Today we will start a new chapter. Yes. Today we will start a new chapter. Two chapters already completed. That one Shabda Parichaya first and Shabda Parichaya second. In both chapters we have learned about. In first chapter we have learned about Pulling Shabdaha. In second chapter we have learned about Striling Shabdaha. Now the third chapter is done, and that is Napumsaklinga Shabdaha. So we will start that one. All the members, please open your textbook in front of you. Have a pencil and a rough. Always note down what the words I am saying and what is the meaning. Don't be dependent on the given words meaning in your textbook. Always focus on your teacher. Okay. So let's start. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तृतीयः पाठः. Everyone follow me. तृतीयः पाठः. शब्द परिचयः थर्ड. शब्द परिचयः थर्ड. ओके. तृतीयः पाठः मीन्स थर्ड चैप्टर. शब्द परिचयः थर्ड मतलब तीसरे टाइप का शब्द परिचय हुआ. फर्स्ट में हम लोगों ने पुल्लिंग शब्द को देखा. दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने स्त्रीलिंग शब्दों को देखा. अब हम लोग नपुंसकलिंग शब्दों को देखेंगे. शुरुआत में मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 प्रकार के लिंग हैं. 3 टाइप्स ऑफ जेंडर्स इन संस्कृत. 2 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. नाउ थर्ड वन इज हियर. सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज देयर. एतत् किम. एतत् किम. फॉलो मी. एतत् किम. नाउ एतत् खनित्रम् अस्ति. एतत् खनित्रम् अस्ति. श्रमिका खनित्रं चालयति. श्रमिका खनित्रं चालयति. क्या मतलब है, ध्यान से देखते हैं हम लोग फिर से. हम लोगों ने नियर बाई चीज के लिए पुल्लिंग में सीखा था एषः. स्त्रीलिंग के लिए सीखा था एषा. नपुंसकलिंग के लिए क्या बोलना है, एतत्. एषः पुल्लिंग, एषा स्त्रीलिंग, एतत् नपुंसकलिंग. So एतत् किम is the same word already repeated in your earlier chapters. But here किम means क्या, what. और एतत् this one. लेकिन this one के लिए पुल्लिंग में यूज होता है एषः. this one के लिए स्त्रीलिंग में होता है एषा. this one के लिए स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में यूज होता है एतत्. So एतत् किम, what is this. So in Sanskrit you can find out what is the gender with the use word, what words used there. With the help of that you can find out very easily which gender is there, which vachan is there. एकवचन अस्ति, द्विवचनम अस्ति और बहुवचनम अस्ति. In Sanskrit it is a very different thing and it's very special thing of Sanskrit. So etat kim, when someone asks etat kim, so your answer will come etat खनित्रम. एतत् खनित्रम अस्ति. खनित्रम मीन्स जो फावड़ा होता है ना, जिससे हम लोग के यहाँ जो हमारे फार्मर्स होते हैं और खेत को प्लॉइंग करते हैं ना, वो खेत को खुदाई करते हैं कभी कभी, उसको बोलते हैं फावड़ा. ठीक है ना, या कुदाल. तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है या यह फावड़ा है. खनित्रम. श्रमिका खनित्रम चालयति. श्रमिका मीन्स श्रमिकः, स्त्री पुल्लिंग. श्रमिका
स्त्रीलिंग. So Shramika shows there is a person, but which gender have that have a feminine gender. So Shramika Khanitram Chalayati, the lady worker is using that Khanitram. ओके ना. तो श्रमिका क्या करती है, उस उस कुदाल को चालयती मतलब चलाती है. श्रमिका उस कुदाल को चलाती है. What happened with Srihita? I think Srihita is not getting clearly. Okay. So you getting me better ना Srihita? Okay, very nice. चलो. So एतत् किम, यह क्या है. एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है या यह फावड़ा है, दोनों बोल सकते हैं. श्रमिका खनित्रम चालयति. Here may be a question. श्रमिका किम करोति. In last chapters we have seen like this. श्रमिका किम करोति, श्रमिका क्या कर रही है. Then you can answer श्रमिका खनित्रम चालयति. But here no question is there. You can put your questions. You can add a question from your side. Additional questions. श्रमिका किम करोति, श्रमिका क्या कर रही है. So answer is there only. Right answer given there. श्रमिका खनित्रम चालयति. श्रमिका जो है वो कुदाल को चला रही है. तो यहाँ तक हम लोग पूरा हुआ. स्टार्टिंग फर्स्ट सेक्शन पूरा हुआ. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछिए आप लोग. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए बेटा. You don't know. Okay. Shramika actually, sorry, Khanitra means, do you know? Just open your mic. Yeah. Have you seen a farmer in your area in Srisila? Yes. In the morning, sometimes that person have a stone, sorry, a wooden and iron structure having. Like in your book, what given in your book, just see this one, which she have in upside of their head. Okay na? No, 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 no. Okay, that one is digging. Dig मतलब होता है खुदाई करना ना. But that one is digger. In your book given there, digging axe. Okay. In your area, I don't know. In our Telugu, what is the meaning? I don't know. Anyone knows in Telugu? Yes. What is? Okay, one members beta. What is the meaning? Nagari. Yes, you tell beta. Try just you tell. You don't know. Anyone more? Anyone knows Niharika or Vandana or Srihita or where are monitors? Anyone knows about that? Yes, tell beta. Yes, what is para? In Telugu that one para. No? This one just see in your book picture is given. Book, that one is a para. Okay. Okay, over. Now, so what is the meaning? You got in Telugu beta na? Yes. Okay. One member who asked remaining, I know remaining members already knows very well. So, in first section, anyone more doubt? First section, anyone have doubt? No. Okay. So let's continue. First section,
फर्स्ट सेक्शन वाज डिपेंडेंट ऑन नियर बाई नपुंसकलिंग शब्द है ना. That then second section will come for a far a thing is situated from your side, afar, so much far from you, having so much distance from yourself. So that one, in that case what we will say, in pulling shabdah we told shah, in striling sa, and in napumsakling tat. Tat, etat nearby, tat having so much distance. Okay, so let's start. Follow me. Tat kim, tat kim, answer came tat vishram griham, tat vishram griham अस्ति. किम अत्र भित्तिकिम, सॉरी, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति. सो आई थिंक आप सभी लोगों ने प्रोनाउंसिएट किया. हम लोग इसको पढ़ते हैं. तत् किम, जब कोई चीज नपुंसक लिंग है और थोड़ी दूर है, situated so much far from yourself, then you should say तत्. तत् किम, वह क्या है, वह क्या है. In figure you are what you can see that one is a rest house or a sitting place like something na. In Sanskrit that one is known as विश्राम गृह. रेस्ट हाउस बोलते हैं हम लोग, या फिर गेस्ट हाउस तो नहीं बोलेंगे बेटा. दैट वन इज एक्चुअली नॉट गेस्ट हाउस. नो नो नो, actually that one is not guest house, that one is rest house. In different, what is difference in rest house? Yes, that one only said. Okay, getting very good. So said, but said is only for resting there, having a 10 minutes 15 minutes 1 hour rest, not having a sleep or to stay there. That is only for a rest. That one, that's why that is known as rest house. So that is rest house in Sanskrit. That one is known as Vishram Griham. So Griham Shabd is Napumsak Ling Shabdam. In start I told when Halant will come, and in actual word Halant will come, it means that one is Napumsak Ling. Griham, that one is Napumsak Ling. Vishram is added in that word, but actual word is there Griham. So that word is Napumsak Ling word. Now what we should do? Vishram Griham Asti, it means आराम करने का स्थान, किसी जगह waiting, you can say just waiting like a waiting room also. So yes, nearby bus stand there are so many waiting houses, small few chairs are there, so, like rest house. Okay, that one. So tat विश्राम गृहम अस्ति, tat मतलब वह, विश्राम गृह मतलब आराम करने का स्थान, थोड़ा देर रेस्ट करने का प्लेस, रूम. सो वो विश्राम गृह है, वह विश्राम गृह है. किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति. क्वेश्चन इज देयर. भित्तिकम बोलते हैं फेंस को, फेंस और बाउंड्री. ओके ना, sometimes there are fencing na, there are boundary, there are wall, that one is known as bhittikam.
In Sanskrit, that one is Vittikam. No need to, not pillar. That is wall, boundary wall, like boundary wall or room wall. You got na? Yes. Chalo. Yes. Okay. No need to say, beta. Don't open your mic. It disturbs. I actually recording your video na. So it will upload. It will upload it to your channel. And that time, if you will say no, share, yes, sir, it will take so much time. So follow me. I know one member told. It means okay. तो तत् किम तत् विश्राम गृह मति अस्ति, वह रेस्ट हाउस है, वह विश्राम गृह है. किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पे फेंसिंग है, बाउंड्रीज है, और इज दैट इज कवर्ड विथ वॉल, इज दैट कवर्ड विथ वॉल. क्या बोल रहे हैं? किम अत्र, किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम अस्ति, भित्तिका मतलब दीवाल, अस्ति मतलब है. तो क्या यहाँ दीवाल है? वॉल. दीवाल मीन्स वॉल. Make of bricks or something. Made of bricks. So answer is there. Atra भित्तिकम न अस्ति. अत्र भित्तिकम न अस्ति. न अस्ति नहीं है. न नहीं, अस्ति है, नहीं है. क्या नहीं है? भित्तिकम दीवाल. तो बोल क्या रहे हैं कि वहां दीवाल नहीं है, वहां दीवाल नहीं है. Yes, it means that is open, fully open, only having a shed or a roof, small roof, but not have a protection wall. So that is fully opened. So he is saying अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवाल नहीं है. Okay, it means everyone got. Now tell me, anyone have doubt? One by one, open your mics and tell. Yes, very nice. Yeah. Remaining members, put your mic up. Only sign Nihal, you open your mic. Remaining, put your off. Mr. P. Subhash and yes, P. Subhash. This one is remaining. Yes, tell beta. For human. Okay, actually humans are having all the things depend on. Who is this one? Put your mic off. Yes, Shiny, I'll just follow, just listen. What I'm saying, human having two types, a male and a female. If female will be there, you should say sa. In second chapter we have learned sa ka. There was the question sa ka sa ghatika, sa ka sa mahila, sa ka sa srihita, sa मनस्वी, सा वंदना. Okay, no? But if you are saying a male person, sa sah kah, question will be there, sah kah, then answer will come sah shauchikah, sah sai nihalah, sah sah शिक्षकः, सः प्राचार्यः, सः चालकः. Okay, so when you are using pulling word, that time you should say sah for things having so much distance, situated so much far from you. Same as for female you should say sa. Same as for napunsak ling you should say tat. Okay, you got na? Anyone more doubt? No. Anyone of you having any doubts in section number 2? Yes. Anyone have doubt? I think there is no doubt. So we should
Start for next. एते के, एते के, एते के, एते अंगुली, अंगुलियकु, अंगुलियुके, एते अंगुलियके. Here there is a U की मात्रा, just that is only printed by mistake. No need to read that. एते अंगुलियके स्तः, एते अंगुलियके स्तः सुवर्णकारः अंगुलियके रचयति. Here may be a question, सुवर्णकारः किं रचयति और सुवर्णकारः किं करोति. Maybe questions, you can put questions from yourself. सुवर्णकारः किं करोति. So answer is there. सुवर्णकारः अंगुलियकम, अंगुलियके रचयति. ठीक है. So just listen again. एते के, एते मीन्स यहाँ द्विवचन हो गया. एतत् that is एक वचनम, एते द्विवचनम for nearby things. एते के ये क्या हैं, ये दोनों क्या हैं. दो चीजें दिख रही हैं, आप देखिए फिगर में दो चीजें दिख रही हैं. टू रिंग्स आर देयर टू फॉर wearing in your fingers. There are two rings. For them the word is used ete. Etat was only one for one, ete for dvivachanam, and etani for bahuvachanam. That will come automatically. So ete के ये क्या है, ये दोनों क्या हैं. आंसर इज एते अंगुलियके स्तः, एते अंगुलियके स्तः. ओके. ये अंगूठियां हैं, अंगूठियां, अंगुलियके मीन्स अंगूठियां, रिंग्स. ठीक है ना. एते अंगुलियके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं. देखिए एक उसके हाथ में दिख रही है और एक उसके टेबल पे रखी हुई है. दो रिंग्स हैं. नेक्स्ट वन इज देयर सुवर्णकारः. सुवर्णकारः इट मीन्स दैट ज्वेलर. यस टेल. यस 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 यस. क्या बोलते. ओके ओके ओके. सुवर्णकारः किसको बोलते हैं, जो आपके गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स को बनाता है, उसको बोलते हैं सुवर्णकारः. उसको सामान्य भाषा जो बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं सुनार. ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से इसको लिख भी लीजिए अगर बुक में नहीं होगा. आई थिंक गिवन गिवन इन योर बुक गिवन सुनार, उसको बोलते हैं सुनार. ठीक है ना. जो सोना का काम करता है, जो सोने को बनाता है ना, उसको बोलते हैं सुवर्णकार. इन तेलुगु व्हाट इज द नेम फॉर दैट पर्सन. डू यू नो इन तेलुगु. नो, डोंट नो के बात. ओके 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 ओके. आई एम आस्किंग बेटा दिस वन ओपनिंग माइक ना, तो टेल मी फॉर अ goldsmith or the person who is making the ornaments, for that कर्णकारः, कर्णकारी, कर्णकारी. ओके गॉट. सो सुवर्णकारः that कर्णकारी, it means that sonar. in Hindi सुनार word there. तो सुनार अंगुलीयके रचयति. रचयति that is making, बनाता है. What is making?
अंगुलीयके, अंगूठियां। तो सुवर्णकार अंगूठियां बता है एक आपको इस अंगुली में बनने के लिए बना रहा है, किसमें बना रहा है। Who is your Suvarnakara? Your teacher is your Suvarnakara. How? If you will follow your teacher, you will be the best. You will get a good job, and that time you will automatically purchase so many rings. So your teacher is making you better for your better future. Okay, like the same, that one Suvarnakara, that one Karnakari is using is making two rings. Here that word is Anguliyake. Was there ete, etat, ete, etani. Dvivachanam asti tatra. Sorry, there is a dvivachanam. So एक स्वर्णकार अंगुल्यके रचयति। स्वर्णकार जो है वो अंगुली दो अंगूठियां बना रहा है। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए बेटा। अप टू थर्ड पैराग्राफ एनीवन हैव डाउट? नो, आई थिंक नो वन हैव। ओके, तो नो वन हैव डाउट। तो लेट्स कंटिन्यू फॉर फोर्थ पैराग्राफ। ते के, just try to pronunciate all the members. ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेलस्थानकं गच्छतः, ते रेलस्थानकं गच्छतः। I hope you all followed me. I am telling again. ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेलस्थानकं गच्छतः। So, क्या यहाँ पे बताया गया? ते के, what are they? They word is here for two things. Two Napunsakling situated so much far from you. So question is there. ते के, वे क्या, वे दोनों क्या हैं? ते बसयाने स्तः, वो दोनों बसयान है। बसयान इट मीन्स बस, जो हम लोग यहाँ बस होती है उसको बोलते बसयान। तो वे दोनों बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसेस, कुत्र मतलब कहाँ, वेयर, गच्छतः मतलब जा रही हैं। For if there will be one thing, so what the word we will use? Gacchati. Here two, that's why gachatah. If there will be more, that time will be gachanti. So in Sanskrit I told already, na, you have to work hard in starting, but if you will work hard, then it will be so easy for you. In future always you will have, when you will get option to have Sanskrit, you will choose Sanskrit. Okay, Sanskrit is better, Sanskrit is better. Like this you will say. So let's start. ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसेस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसे, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? where both buses are going. So answer is ते रेलस्थानकं गच्छतः। ते means वे दोनों, रेलस्थानकं means railway station.
रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन, गच्छतः जा रही है, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। सो अभी आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग 4 सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग 2 सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, और उस दिन हम लोग लाइक ऑलवेज वी विल टेल एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, लाइक एतत् एते एतानि तत् ते तानि, like this. In last chapter we did like this, na? So we will have practice in next period. We will have so much practice for that ekvachanam, dvivachanam and bahuvachanam section. Till then, here we will sorry. Till then we are only learning only starting 4 paragraphs. So in these all paragraphs, anyone have doubt, just ask beta. If you have question, just ask. Yes, Rita. चालयति, चालयति मतलब चलाता है, that is चलाना, like this, चलाना। तो चालयति मतलब चलाता है। ओके, yes. Any more doubt? Yes. Okay. ते रेलस्थानकं गच्छतः, ते वे दोनों, what is for whom this word is used? वे दोनों, they word is used only for the 2 buses. So both buses are रेलस्थानकं, that is railway station, गच्छतः मतलब जा रही हैं, वे दोनों बसेस रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आप देखिए ना, तो सामने रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, रेड बस आगे आगे जा रही है एंड ग्रीन बस इज फॉलोइंग दैट बस। सो वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। एनीवन मोर हैव डाउट? एनीबडी? यस। रेल स्थानकम, that is railway station. Related to which one word you are asking? Yes, yes, rail sthanakam, that is napunsak ling. Yes. Rail sthanakam also napunsak ling word. रेल यानम also नपुंसकलिंग word. बस यानम also नपुंसकलिंग word. ठीक है ना? Yes, but when you will use a bike in Sanskrit, bike is स्त्रीलिंग word. द्विचक्रिका, cycle and bike. द्विचक्रिका, both are द्विचक्रिका. Cycle is द्विचक्रिका और स्वचालित द्विचक्रिका, that is bike. When you will use chakrika, in that last word is coming chakrika, akarant is there. That's why that word is a striling word. So bike is a striling word in Sanskrit, but karyanam, that is not a Sanskrit. Okay na? Sorry, karyanam is not a striling, that one is a napunsakling word. You got na? Any more doubt? किसी को कुछ भी पूछना है बेटा? नहीं? चलिए हम लोग आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने एक वचन और द्विवचन को देखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे बहुवचन। कौन कौन से बहुवचन? नियर बाय बहुवचन एंड अपार बहुवचन। ठीक है, तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आज क्लासेस हम लोग के लिए इतनी ही रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।